Yeah, screen is visible. Fine. So So, I have the Azure account, paid Azure account. So hmm. no need to create new account free, like, or what is the best suggestion? If you have already subscription of Azure, we just need to purchase one add-on license. That's it. So how much it costs? It's a free of cost for 1 month, but after that you have to pay for the license up to 1200 something per month. Okay, 1 month is free of cost. Okay, no Yeah, problem. 30 days free of cost, and after that you have to pay the amount, right? Uh, okay. Fine. So in over Azure portal, you know about Active Directory management, Microsoft Intra admin, right? Yeah, I know. But start with the basic, no problem. Yeah. Okay, great. Fine. So let's try to understand about the concept of Intune first, and then we'll discuss about the implementation process, different types of licenses that required to manage Intune services. Nowadays, every organization, most of organization, they need to set up or control their devices with the help of cloud. Cloud in the sense I'm talking about the Intune portal. So Intune is a type of cloud portal, right? So you need to open HTTPS, and just like as a Intune, just like as a means Azure portal, you need to type intune.microsoft.com. This is the URL that we need to use to sign up ourselves over our Intune portal. And once we sign up ourselves over Intune portal, we must need to add license, because without license we are not authorized to enroll any kind of devices. We cannot control any kind of devices. We are unable to execute any application. The name of license is Enterprise Mobility plus Security E5. This is the license name, right? And by using this particular license, we can enroll multiple devices as per the number of licenses that you have. In case of free trial, whenever we activate free trial license of Mobility plus Security E5, Microsoft will provide you 25 different licenses. And these licenses are valid for 30 days. After that, after end of free trial, you have to pay 1200 something rupees per user per month license cost. So for the testing and training purpose, I think free trial is enough to understand about the services. If you want to learn about how Intune can perform the task, free trial is enough to perform all the tasks. Although, if you consume the entire 30 days of your free trial license, you can proceed and create another account. So no need to pay the amount for the learning purpose. You always create a free trial account to utilize the Intune services. Now, about the use cases. You know that multiple platforms are available. Platform in the sense I'm talking about the operating system that we have. Microsoft Intune can help us to enroll any kind of Windows computer. We can enroll Mac device. We can enroll iOS based device and Android based device as well. You can also enroll Chrome operating system and Linux machine. All types of platform we can enroll directly to the Microsoft Intune portal like this. Once you enroll the devices, we are authorized to manage and control all types of activity related to our on-premises machine. What are the tasks we can perform? We can perform the task of GPU. We are authorized to install application, any kind of application, office application you want to install. It gives us option of conditional access. It's a type of policy. You can configure conditional access policy. It gives us option of to configure compliance.
and many more, like add update. You want to manage your device with the help of PowerShell script. So these all tasks we can perform with the help of Microsoft Intune portal. Means you can fully manage and control the resources which are available on on-premises. On-premises पे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको हम आसानी से अपने Microsoft Intune के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, नो मैटर कि आपके डिवाइस की लोकेशन क्या है. दिस इज क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म. सो वर्क फ्रॉम होम से जब कंपनियां स्टार्ट की हैं टास्क परफॉर्म करना, डेफिनेटली हर एक एम्प्लॉय दे ऑल आर यूजिंग देयर ऑन आईएसपी. हर एक यूजर का अपना पर्सनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है. सो इस केस में कंट्रोलिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. So Intune can give us a proper solution to provide high level of security. कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है डिवाइस की, या आपका डिवाइस चोरी हो जाता है या और कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो एक सिंगल क्लिक पे अगर आपके डिवाइस इंट्यून पे इनरोल है तो आप सिंगल क्लिक पे उस डिवाइस का पूरा ऑफिशियल डेटा, आई एम नॉट सेइंग कि पर्सनल डेटा, ऑफिशियल डेटा जितना भी आपने कॉन्फ़िगर किया है वो सारा डेटा एक सिंगल क्लिक पे वाइप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. ओके. अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो ऑल द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर आल्सो, लाइक It is applicable for all. It is applicable for work group based machine, domain based machine, या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जिसको हम BYOD कहते हैं, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, उसके लिए भी है. अगर आपने डोमेन इस्टेब्लिश कर रखा है तो आप बल्क इनरोलमेंट का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. एक साथ जितने भी क्लाइंट हैं उनको आप इनरोल कर सकते हैं. ऑटो पायलट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल. यस यस. ओके. So we have a multiple method to control our on-premises device. On-premises device का फॉर्मेट क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, मीन्स किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारा सिस्टम अवेलेबल है. इट इज अवेलेबल इन वर्क ग्रुप या डोमेन या पर्सनल बीबीआईपी कस्टमर है या बीपीआईपी क्लाइंट है, उसके इंडिविजुअल डिवाइस को इनरोल करना, वो सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं इंट्यून पोर्टल के जरिए. क्लियर. ओके. या क्लियर. सो व्हाट आर द मेन प्रीरिक्विजिट. ये लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, साथ ही साथ आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर प्रीरिक्विजिट विच इज माइक्रोसॉफ्ट एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, जो करंट टाइम पे हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन के नाम से जानते हैं. सो यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन इज अ टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, एक तरीके का डैशबोर्ड है. इंट्रा एडमिन portal. And over a Microsoft Intra Admin portal, we can manage users, we can configure groups, we can configure multi-factor authentication, SSPR की सर्विस है, AD join we can manage, और AD connect का भी ऑप्शन हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है. यूजिंग सिंगल Azure Active Directory हम मल्टीपल डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर कर पाते हैं. द मल्टीपल डैशबोर्ड इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द पोर्टल. अलग अलग पोर्टल को भी कंट्रोल करने के लिए हम सेम Azure Active Directory का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने Azure की सर्विसेज मैनेज कर रखी हैं. Azure services like virtual machine, our application, our databases that you establish over Azure portal, same Azure AD के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है. Microsoft 365 मींस Office 365 की चीजों को आप मैनेज कर पाओगे. इन ट्यून की सर्विसेज को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे. और साथ ही साथ अगर आप VDI का सॉल्यूशन लगाते हैं जिसको हम AVD के नाम से जानते हैं, Azure वर्चुअल डेस्कटॉप, इन सभी तरीके के प्लेटफॉर्म को आप एक सिंगल Azure एक्टिव डायरेक्टरी के जरिए कंट्रोल और मैनेज कर पाएंगे. Means the users that you created on Microsoft Azure Active Directory, like ABC, this is the user that you created. By using same ABC user, we can manage our Azure services. ABC Azure को भी manage करेगा. ABC हमारे licensing part means Microsoft 365 को control करेगा. Same account के through हम device को enroll कर सकते हैं और same account के जरिए आप Azure Virtual Desktop के अंदर किसी भी device को RDP assign कर सकते हैं. So
Our responsibility, we should know about the each and every part related to our Azure Active Directory. We'll start from the very basic of Azure AD. Then we'll discuss about the another options which that we have. Means we'll try to utilize same user to manage our on-premises to manage our on-premises device by using Microsoft Intune services. Okay. ये सारा का सारा टास्क जो होगा वो क्लाउड के थ्रू होगा, मींस पोर्टल के जरिए हम सारी चीजें मैनेज करने वाले हैं। डिवाइसेस हमारी ऑन प्रोमाइसेस पे रहेंगी, बट उनको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल की होगी। क्लियर? Clear. ठीक है। सो मल्टीपल मेथड वी हैव टू मैनेज आवर इंट्यून सर्विसेज। उसके लिए आपके पास एक टेनेंट होने की जरूरत है, एक सब्सक्रिप्शन या लाइसेंस होना जरूरी है। नो मैटर आपके पास एज्योर पोर्टल का सब्सक्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल दिस इज abc at gmail.com that you use to set up your Gmail, set up your Office, Microsoft 365 portal or Azure Active Directory Azure portal, Microsoft 365 portal या Azure Active Directory अपने setup कर रखा है। By using same portal, by using same Azure portal, you need to purchase एड ऑन लाइसेंस। हमें अपने एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन में एक एड ऑन लाइसेंस ऐड करना पड़ेगा, विच इज मोबिलिटी सिक्योरिटी E5। ये लाइसेंस आपका जो है कोर रिलेटेड टू द इंट्यून सर्विसेज है। इस लाइसेंस के जरिए हम किसी भी डिवाइस को इनरोल कर पाएंगे। देन यूज सेम अकाउंट abc@gmail.com, सेम अकाउंट का हम इस्तेमाल करेंगे टू ओपन इंट्यून पोर्टल। Using same user ID and password, we can open the Intune portal, and Intune portal can also provide multiple option. यूजर का ऑप्शन हमें मिल जाएगा, ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशन की डिटेल्स मिल जाएगी और डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। So I'm going to show you. Let me open my Microsoft 365 portal और उसी 365 के यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम अपने Intune की सर्विसेज को भी मैनेज करेंगे। Office.com. This is my root account, the root account that I created. It's a Manjeet at the rate teachmecloud389.onmicrosoft.com. This is Microsoft 365 portal, and over a 365 portal, I'm able to manage mailboxes. हमें कोई भी mailboxes configure करना है. So with the help of this particular account, I can do that. Azure, GCP, support, Tata, Telnet, these all are the users that I already created और जिनको हमने license वगैरह भी assign कर रखा है। Next, open Intune portal, intune.microsoft.com. I'm going to use same account, same user account जो हमने Microsoft 365 की services के लिए create किया था, same account को हमने login कर लिया है अपने Intune portal के लिए। This is the panel of Microsoft Intune. We are able to find dashboard, services, devices, application, endpoint security, users group, tenant, and some part of troubleshooting. Click on all services. It will redirect you on the page of multiple services which are available. Let me check how many devices are already enrolled with this particular account. It gives us information about Windows, iOS and iPads, Mac operating system, Android devices and Linux devices. एक इंट्यून इंजीनियर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है या जो पहला टास्क हम बोलते हैं, इंजीनियर मस्ट नीड टू नो अबाउट द मेथड, इंजीनियर मस्ट नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर टू एनरोल डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लिनक्स की एनरोलमेंट का प्रोसेस अलग होता है, विंडोज के एनरोलमेंट का प्रोसेस अलग होता है, राइट? एंड अबाउट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस के एनरोलमेंट का प्रोसेस टोटली डिफरेंट होता है। Now, Okay. what we need to do, I have already enrolled one device, Windows device, ITPC के नाम से हमने एक device enroll कर रखा है. The ITPC that I establish on on-premises. Local machine पे VMware workstation के जरिए हमने इसको install कर रखा है, and I have already enrolled with this particular portal, right? So
विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, और एक ही डिवाइस को एनरोल करने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं. You can directly enroll with the help of MDM URL. You can enroll the device with the help of company portal. We can enroll the device with the help of autopilot and bulk enrollment. So ये सभी फीचर्स हैं जो हमें डिवाइस को enroll करने की में हेल्प करते हैं. क्लियर? Yes, clear. ठीक है. सो इफ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, और आपके पास एक एज्योर का पोर्टल है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू यूज सेम अकाउंट या सेम ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आप क्या करना चाहते हैं, यू वांटेड टू कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज. तो इंट्यून की सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए यू शुड नो अबाउट द लाइसेंसिंग पार्ट. तो सबसे पहले हम लाइसेंसिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अकाउंट क्रिएट करना आपको पता है, यू हैव आइडिया अबाउट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, तो आई डोंट थिंक कि उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी. क्लियर? Yes, clear, sir. सो आई एम गोइंग टू ओपन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जिसको अभी हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन के नाम से जानते हैं. सो दिस इज द पैनल ऑफ इंट्रा एडमिन सेंटर, मीन्स एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी. And over Azure Active Directory, we are able to find multiple options. ये dashboard है where we can find the details of our AD. ये हमारा default domain है. This is the tenant ID. मेरा primary domain P2 license, P1 license, number of user, number of group, number of application और number of devices जो अभी तक हमने इस account से add करने की कोशिश की है. कुछ devices हैं जो अभी क्या है, अनमैनेज्ड है. अनमैनेज इन द सेंस कि जिनको हमने कनेक्ट किया है, बट इन डिवाइसेस को इंट्यून पे इनरोल नहीं किया. सो इट गिव अस अ कंप्लीट डिटेल अबाउट द नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट वी एडेड विद दिस पर्टिकुलर अकाउंट. बट वो पॉसिबल कैसे है? इंट्यून पे एज्योर एडी पे जाते हैं. व्हाट यू नीड टू डू, यू मस्ट नीड टू कनेक्ट विद लाइसेंस. एज्योर एडी पैनल पे जाकर के बिलिंग के ऑप्शन पे जाकर के लाइसेंसिंग के पार्ट पे आप क्लिक करेंगे. सो इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ लाइसेंसेस दैट वी हैव. Click on all products. It give you the information about the number of licenses that you purchased. आप देखिए यहाँ पे multiple licenses हमने purchase कर रखे हैं. Mobility plus Security E5, Enterprise Mobility plus Security E5, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 E3, और यहाँ पे Power Automate free license है, Microsoft Teams का license है. These all are the license information. इफ यू वांट टू बाय न्यू लाइसेंस, जैसे अभी हमारे केस में ये बिजनेस स्टैंडर्ड का लाइसेंस जो है वो एंड हो चुका है, 0 अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है. मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी फाइव का लाइसेंस भी 0 हो गया है. इट मींस दैट यू हैव टू बाय द लाइसेंस, क्योंकि इस अकाउंट के लिए मैंने इसको कंज्यूम कर लिया. जो भी इसकी वैलिडिटी थी या जितने भी नंबर ऑफ लाइसेंसेस थे वो हमने कंज्यूम कर लिया. अगर आपके पास लाइसेंसेस अवेलेबल है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा. जैसे E3 लाइसेंस 25 हैं, जिसमें से 4 हमने यूटिलाइज किया है, और अभी भी 21 लाइसेंसेस हमारे पास वैलिड है, अवेलेबल है. क्लियर? Yes, sir, clear. इफ यू वांट टू बाय द लाइसेंस, ट्राई या बाय पे क्लिक करेंगे, एंड दिस इज द डिफॉल्ट लाइसेंस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है. बट इफ यू वांट टू बाय द लाइसेंस, हमें इसको परचेज करना पड़ेगा. बट यू हैव टू पे द अमाउंट. आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री ट्रायल कंज्यूम करने के बाद इस वाले पैनल पे आएंगे. दिस इज परचेज सर्विसेज वाले पैनल पे आएंगे, जहां पे आप अपने किसी भी लाइसेंस को खरीद सकते हैं. So what you need to do, we just need to click on all products, और हमें चाहिए mobility security E5 का लाइसेंस चाहिए हमें. So I'm just going to search mobility plus security E5. I know I have to pay the amount. That's why I created a separate account for Intune services. And we are able to find enterprise mobility plus security E5 जो कि core related है with इन ट्यून सर्विसेज. यहाँ पे ट्रायल अवेलेबल है, ये ऑप्शन दिखा रहा है, तो मे बी कि हमें ट्रायल एक एक्सेस करने को मिल जाए. अदरवाइज if you don't have a trial account, so you have to pay 1370 rupees
पर लाइसेंस, मतलब पर यूजर पर लाइसेंस। द मीनिंग ऑफ पर यूजर पर लाइसेंस, एक लाइसेंस के थ्रू आप 15 डिवाइसेस को इनरोल करा सकते हो। बाय यूजिंग सिंगल लाइसेंस वी कैन इनरोल अप टू 15 डिवाइसेस। सो लेट मी चेक कि फ्री ट्रायल में हमें ये ऑप्शन दे दे। क्लिक ऑन डिटेल्स। अंडर द डिटेल्स इट विल प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास प्लान है। यू कैन प्रोसीड विद 1 मंथ, 1 ईयर या 3 साल के लिए हम परचेज कर सकते हैं। इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन व्हाट वी कैन से दैट इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन द यूज केसेस। अगर हमें लग रहा है कि हमें इस लाइसेंस की लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत होगी तो मोस्टली वी कैन प्रोसीड विद ईयरली बेसिस। ठीक है, तो ये ईयरली बेसिस का प्लान है। और देन यू कैन प्रोसीड विद अपफ्रंट पेमेंट फॉर 36 मंथ, मीन 3 साल के लिए आप पे कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। बट आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद पेड वर्जन। लेट मी चेक कि फ्री ट्रायल ये हमें ऑथराइज कर दे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी 5 फ्री ट्रायल लाइसेंस, और ये मंथली बेसिस के लिए। तो 1 महीने के लिए भी अगर हमारे पास लाइसेंस आ जाता है तो वी कैन परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क रिलेटेड टू इंट्यून। सो जो एज्योर का पोर्टल आपके पास है, आप सेम स्टेप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपका एज्योर सब्सक्रिप्शन इज टोटली डिफरेंट, और इंट्यून के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। टोटल कॉस्टिंग यहाँ पे आ रही 1370 रुपीज, बट फ्री ट्रायल एलिजिबल है हमारा अकाउंट। सो आई थिंक वी नो नीड टू पे एनी सिंगल अमाउंट। यहाँ पे जीरो अमाउंट दिखाई पड़ रहा है। आई वांटेड टू प्रोसीड, प्लेस ऑर्डर। बिना किसी पेमेंट के हम अपने इस फ्री ट्रायल लाइसेंस को इस्तेमाल करेंगे 30 डेज के लिए, और उसके बाद जब सारा प्रैक्टिकल हो जाएगा देन विल प्रोसीड टू बाय द लाइसेंस, या फिर हम दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। वी सक्सेसफुली एक्सेस द मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी 5 लाइसेंस, हमने प्रोसीड कर दिया। और थोड़ी देर में, अभी ये सब्सक्रिप्शन पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है 25 लाइसेंसेस, थोड़ी देर में ये हमारा लाइसेंस जो है अप्लीकेबल हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। लेट मी रिफ्रेश द पेज। Now our license is activated, means you are eligible to manage our Intune services. So how we can identify? Click on the licenses, and in the licenses part we'll find one license of mobility plus security 5. एंड नाउ वी आर एबल टू फाइंड 25 लाइसेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं जो कि फ्री हैं। हमने अभी अपने इस यूजर इस लाइसेंस को किसी भी स्पेसिफिक यूजर को ऑथराइज नहीं किया। हमने इस लाइसेंस का इस्तेमाल किसी भी यूजर को असाइन करने के लिए नहीं किया। इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज ओके। अब अगर आप इंट्यून का पोर्टल ओपन करेंगे, इफ आई एम गोइंग टू ओपन द इंट्यून पोर्टल, एंड ओवर इंट्यून पोर्टल अगर हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं और सेम यूजर का इस्तेमाल करते हैं टू एनरोल एनी डिवाइस, वी कैन डू दैट। Without license we are not authorized to perform the task, but yes, with the help of licenses we can manage our enrollment process. All good? Yes, sir. So what I'm going to do, let me check with the new virtual machine. I'm going to create one virtual machine on premises. जो हमारा ऑन प्रोमाइसिस डिवाइस है, इसमें एक VMware वर्कस्टेशन की हेल्प से एक वर्चुअल मशीन तैयार कर लेते हैं, विंडोज 10 या विंडोज 11, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। विंडोज से इनरोलमेंट ही स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल आल्सो डिस्कस अबाउट कि अदर डिवाइसेस को कैसे इनरोल किया जाता है। अदर डिवाइसेस इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इनरोल करेंगे। Let me set up one virtual machine based on Windows 11
And you must need to use VMware workstation and put it into the bridge connection. Okay. I need to install. So open the setting of virtual machine, go to CD and DVD and provide the ISO image to install the operating system. Installation is in progress, but ये एक means ऑन प्रोमाइसिस की डिवाइस होगी जिसको हम इनरोल करेंगे. बट बिफोर इनरोलमेंट you also need to know about some important part related to Microsoft Azure AD or Microsoft Intune. So I wanted to know about how much you comfortable with Microsoft Azure AD services, क्योंकि हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो Azure Active Directory से स्टार्ट करना है. So let me help you to understand about the content. Azure AD में Microsoft Azure AD में आपको क्या क्या चीजें अभी क्लियर है. I'm talking about the objects management. The meaning of objects management, you should know about the groups, how many types of groups are available. Our responsibility, we must need to know about the users management. You should know about how to configure multi-factor authentication, the use cases of SSPR service. Our responsibility, we need to know about the Azure AD join, the importance of Azure AD join, and also need to know about the Azure AD Connect, right? How to activate SSO, single sign on. We should know about save with locker key. क्लाउड के ऊपर कैसे हम अपने विट लॉकर की को सेव करते हैं. And we also need to know about create hybrid environment, hybrid setup using Azure Active Directory. So can you please help me about these points? Yes, sir. मुझे आप 1 second. यस सर, आप मुझे बेसिक ये पूरा ही बताइए. बेसिक से मैं मेरा मतलब आई वांट हाँ, टू लर्न फ्रॉम द बेसिक, नथिंग टू लूज एनीथिंग. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो हम यहीं से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्योंकि एडी जो है मेन पार्ट है. उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम मैनेज करने का काम करेंगे. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एजर एक्टिव डायरेक्टरी. ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं. एंड इन द ऑब्जेक्ट यू शुड नो अबाउट द
use cases of Azure Active Directory. So whenever we open Azure AD panel, it look like this. This is Microsoft Intra Admin Center, which is considered as a Azure Active Directory. Home पे चलते हैं and it look like this. Go to the overview. Under the overview, we just need to click on the users and users के panel पे हमें multiple options दिखाई पड़ रहे हैं. All users, deleted users and users setting. All users पे click करने के बाद it will redirect you on the page of multiple users. Means यहाँ पे हम ऑलरेडी कुछ यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं बट यू कैन क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट, क्योंकि जो यूजर्स आप यहाँ पे तैयार करेंगे वो सेम यूजर आपके इन ट्यून पोर्टल पे भी दिखेंगे। अगर आपने सेम अकाउंट इस्तेमाल किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 डिफरेंट यूजर्स हैं, अगर आप अपने इंट्यून का पेज ओपन करते हो, यूजर का पेज ओपन करते हो, तो वो सभी के सभी यूजर आपको यहाँ पे भी दिखना स्टार्ट किए। मींस जो यूजर से रिलेटेड एक्टिविटी है, यू ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल एंड मैनेज द यूजर्स एक्टिविटी थ्रू द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पैनल। यूजर की एक्टिविटी को हम हमेशा एज्योर एडी के पैनल से ही मैनेज और कंट्रोल करेंगे। बैक टू द एज्योर एडी and let's try to understand about how we can manage the users. Whenever we click on the user account, it gives us a two different option. एक तो नया create करने के लिए बोल रहा है और दूसरा create a invite, which is considered as a guest user account. इसको हम क्या consider करते हैं? As a guest user account हम इसको consider करते हैं. So we'll discuss about the guest user account usage as well. But meanwhile, let me check the status of our client machine. Anyway, it is in progress. अभी हम new पे जाते हैं. Create new user पे जाते हैं. I wanted to add user with name of demo, and this is my own domain that I purchased from GoDaddy. अगर अपने पास domain नहीं है तो ये हमें onmicrosoft.com का domain provide करेगा. Teach me cloud 389.onmicrosoft.com ये हमारा free of cost domain है, जो whenever we sign up ourselves over Intune portal या फिर 365 या Azure AD पे जब हम साइन अप करते हैं या Azure पोर्टल पे साइन अप करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको डोमेन मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यू आल्सो नीड टू नो अबाउट द मेथड टू मैनेज कस्टम डोमेन। यस, आई वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट, ऐड कस्टम डोमेन। नाउ बैक टू आवर Azure AD पैनल। यहाँ पे हमने यूजर नेम दिया डेमो, display name is also demo, or I wanted to configure my own password. You must need to follow the password policy, uppercase and lowercase, and also use alphanumeric. This is the temporary password. Next, next, and create. We successfully created one user with name of demo user. और इस डेमो यूजर के पास अभी डिफॉल्ट पासवर्ड है। I don't want to use default password, so I wanted to reset the default password. इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन करेंगे, office.com ओपन करेंगे, साइन इन पे जाएंगे एंड लेट मी रीसेट द पासवर्ड फॉर डेमो यूजर। प्रोवाइड योर करंट यूजर अकाउंट, जो आपका करंट पासवर्ड है उससे हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द पेज ऑफ रीसेट योर ओल्ड पासवर्ड, और आपको यहाँ पे एक नया पासवर्ड असाइन करने की रिक्वायरमेंट होगी।
We successfully reset the password, and now you can use same password to log in or to sign in or enroll our device to Microsoft Intune portal. So this is first step, create user and reset the user's password. और भी बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें हैं जैसे MFA वगैरह कॉन्फ़िगर करना. But let me check the status of our virtual machine. It is in progress. Maybe it will take time. Let me check. It is initializing, so wait for a few more minutes. Back to our Azure Active Directory panel and let's try to understand about the use cases of our user. MFA. Users create करने के बाद you can also proceed with multi-factor authentication, but I wanted to proceed with group. We successfully created user. As it is, you can also create the groups. We just need to click on all group. Under the group, already we created multiple groups and number of groups are available. Let me create new group. It gives us a two different method to create group. One is security type group और दूसरा है अपने पास Microsoft 365 group. The gap between security group and Microsoft 365 group, if you want to delegate the user, you want to assign the same policy to multiple user account, then security group can come into the picture. If you want to share the resources like Teams, calendar, conversation, OneDrive with multiple user account, then 365 group come into the picture. So our responsibility, we must need to know about, we are trying to create our user by using, we are trying to use our group for the purpose of assigning the license. So can you please repeat what is the difference between security and Office 365 type group? Sorry, 365 group, Microsoft 365 group is applicable whenever we share the resources to each other. मान लीजिए एक टीम है HR डिपार्टमेंट और उस HR डिपार्टमेंट को हमने कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है कि ये जो मैसेज है सिर्फ HR डिपार्टमेंट के लिए अप्लीकेबल होगा. तो एक एक बंदे को HR डिपार्टमेंट में 15 बंदे काम करते हैं तो एक एक को मेल भेजने से बेटर है कि एक हम ग्रुप क्रिएट करें, उन सभी बंदों की मेल आईडी उस ग्रुप में अटैच करें, एक मैसेज सेंड करेंगे, वो सभी के सभी मेंबर्स को इमीडिएटली रिसीव हो जाएंगे. राइट?
आपको वन ड्राइव शेयर करना है किसी स्पेसिफिक टीम के लिए, शेयर पॉइंट शेयर करना है, शेयर पॉइंट की फाइलें शेयर करनी है स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। सो इन दिस केस वी कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। जहां पे बात आती है सिक्योरिटी से रिलेटेड, जहां पे हम सिक्योरिटी से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, सिक्योरिटी ऑलवेज प्रिफर टू डेलीगेट द सर्विसेज। सर्विसेज को डेलीगेट करने के लिए हम सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए हम सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। लाइसेंस असाइन करना है तब भी हम सिक्योरिटी ग्रुप का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ग्रुप बनाने वाले हैं सिक्योरिटी में जा करके, डेमो ग्रुप के नाम से, डेमो ग्रुप 2, क्योंकि 1 हम पहले से बना चुके हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑनर्स हैं, डू यू वांट टू असाइन द ऑनर, वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर किसी को ऑथराइज करना चाहते हैं कि ये यूजर जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप को मैनेज करे, तो आप ऑनरशिपिंग दे सकते हैं, या फिर आप नंबर ऑफ मेंबर्स में जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर में हमें कई सारे यूजर्स को लाइसेंस असाइन करना है, जैसे डेमो यूजर को लाइसेंस असाइन करना है जो भी थोड़ी देर पहले हमने बनाया, टाटा यूजर को लाइसेंस असाइन करना है, या टेलनेट यूजर को लाइसेंस असाइन करना है। ये 3 यूजर हमने इस अपने ग्रुप में असाइन किए और इसको कर दिया क्रिएट। अब डेमो ग्रुप 2 इज आल्सो रेडी टू यूज। डेमो ग्रुप 2 जो हमने तैयार किया वो भी हमारा रेडी है यूज करने के लिए। आई एम गोइंग टू सर्च आवर ग्रुप दैट वी जस्ट क्रिएटेड, डेमो ग्रुप 2। इसके अंदर लाइसेंसेस, नंबर ऑफ मेंबर्स को देखते हैं, 3 मेंबर अवेलेबल हैं। And I wanted to assign, yes, I wanted to assign the license। तो licenses के पार्ट में जाएंगे, सेम पोर्टल पे, सेम अकाउंट ग्रुप की प्रॉपर्टीज पे हमने क्लिक किया, और we just need to open our लाइसेंस वाला विजार्ड, असाइनमेंट्स पे क्लिक किया, नंबर ऑफ लाइसेंस जो भी है हमारे पास, नंबर ऑफ लाइसेंसेस दैट वी हैव, आप उनमें से जो लाइसेंस अप्लीकेबल है, जैसे मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 का लाइसेंस हम असाइन करना चाहते हैं, सो यस, इन केस ऑफ असाइनिंग द लाइसेंस हमने यहाँ पे E3 लाइसेंस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी E5 लाइसेंस कॉन्फ़िगर किया, जिसके अंदर P2 लाइसेंस आ जाएगा, राइट्स मैनेजमेंट आ जाएंगे, P1 लाइसेंस आ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये लाइसेंस आपको Intune का भी प्लान प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इनके अंदर जितने भी यूजर्स होंगे, इस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे, वो सभी यूजर्स किसी न किसी डिवाइस को इनरोल करने के लिए मैनेज कर सकते, किसी भी डिवाइस को इनरोल आसानी से कर सकते हैं। जस्ट नीड टू क्लिक हियर, assign the license and save the configuration। कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव किया, एंड नाउ एवरीथिंग इज ओके। We successfully assign the license to the group। अभी हमने ग्रुप को असाइन किया है, और अगर आप यूजर्स की प्रॉपर्टीज में जाओगे, जितने भी यूजर्स आपने इसमें ऐड किए हैं, अगर आप इसमें से किसी भी यूजर की प्रॉपर्टीज को ओपन करते हो, लाइसेंसेस में जाते हो, तो आपको थोड़ी देर में लाइसेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 inherited from group 2। So it means that your Tata user, the demo user that we created, ये सभी यूजर आसानी से किसी भी ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस को इनरोल कर पाएंगे। सो क्रिएट यूजर, ऐड यूजर टू द ग्रुप, असाइन लाइसेंस टू द ग्रुप, और उसके बाद जितने भी यूजर्स हैं सबके पास उस पर्टिकुलर लाइसेंस का, जो भी लाइसेंस आपने अपने ग्रुप को असाइन किया था, वो लाइसेंस सभी यूजर्स के लिए इमीडिएटली अप्लीकेबल हो जाएंगे। ऑल गुड प्लीज। Yes, sir. All good. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द पोर्टल।
Now, so let's talk about this is the base जो हम day one start करेंगे कि means how we can enroll the devices. And once you assign the license, our responsibility to know about the procedure to enroll our on-premises device. तो एक बहुत छोटा सा example देखते हैं. This is our Microsoft Intune portal. Over Intune portal, we have already created a user with name of demo. और इस डेमो को हमने एक लाइसेंस भी असाइन कर रखा है. दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम. ये लोकल मशीन है हमारी ऑन प्रोमाइसेस पे. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस मशीन का नाम में भी टेस्ट पीसी, इस कंप्यूटर का नाम हमने टेस्ट पीसी दे रखा है. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनरोल दिस डिवाइस टू माइक्रोसॉफ्ट इंटून पोर्टल. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इस डिवाइस को हम इनरोल करेंगे. इनरोल डिवाइस टू इंट्यून पोर्टल. इंट्यून पोर्टल के ऊपर हम इसको इनरोल करने का काम करेंगे. वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन टू इनरोल इट. कैसे? एक तो हम MDM URL के थ्रू करेंगे और दूसरा हम इसी को कंपनी पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं. We can also enroll by using the bulk enrollment method. और चौथा with the help of autopilot mode. ये अपने पास 4 तरीके हैं जिसके जरिए हम अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन को इनरोल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर. Is that okay about the base of our Intune services to use the Intune services? Clear है यहाँ तक? Yes, sir, clear. है ना? तो व्हाट वी नीड टू डू, एक रियल टाइम एक टास्क की तरह परफॉर्म करने के लिए, रियल टाइम प्रैक्टिकल की तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक या दो प्लेटफॉर्म होने चाहिए ऑन प्रोमाइसेस पे. विंडोज की कुछ मशीनें हम लगाएंगे, मैक की मशीनें हम इन्वॉल्व करेंगे इसमें, और साथ ही साथ एक एंड्रॉयड डिवाइस को भी इनरोल करके देखेंगे. But before that, it's our responsibility. We must need to clear our doubt related to the Azure Active Directory. पहले हम AD का पार्ट प्रॉपर तरीके से कंट्रोल मैनेज करेंगे. AD कनेक्ट, AD ज्वाइन, बल्क इनरोल, बल्क यूजर क्रिएशन, गेस्ट यूजर अकाउंट, इस तरीके के सभी टास्क मैनेज करेंगे. ठीक है. Okay, sir. ठीक है, डन करें आज के लिए इतना. Yes, sir. No problem. ठीक है, तो हम कल कनेक्ट करेंगे सेम टाइम पे, डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द AD कनेक्ट, और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको 1 घंटे के अंदर शेयर कर दूंगा. ठीक है, Sure, sir. Okay. चलो हम मिलते हैं कल. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. Thank you, sir.